Yes, Ansaji, I think we can start. Okay, hello everyone. Good evening. How are you all doing? कैसे हैं सब लोग? Welcome to the session. Is my audio video clear? Just let me know in the comment section. आप yes लिख के भेज सकते हैं अगर मेरा आवाज और मेरा वीडियो आपको दिखाई दे रहा है. First of all, it's a great initiative. आप सब लोग अपना टाइम निकाल के वर्कशॉप में आए हैं, वेबिनार में आए हैं. That's good enough. Yes. So एक बार मुझे please WhatsApp, not on WhatsApp, but on chat box, show me a thumbs up or yes, something if my audio video is clear to it. Okay, thank you, Parul ji. Thank you so much. Okay, so let's start. I'll share the presentation. If the presentation is visible, just let me know. Okay. Is the PPT visible to everyone? Yes, सबको PPT दिखाई दे रहा है. So welcome to the magical pregnancy. आप सभी का magical pregnancy में स्वागत है. It's a good time to start something that is great, which adds value to this journey. And a big thank to all of you, those who have joined for the session. Time निकाल के session में आना भी बहुत बड़ी बात होती है. Yeah? So once again, really thanks to all of those who have joined for the session. Yes. So before we move ahead, एक थोड़ा सा इंटरैक्टिव सेशन रखते हैं हमारे बीच में. आई विल बी स्पीकिंग ऑफ कोर्स, बट थोड़ा सा चिट-चैट सामने से भी आएगा तो और मजा आएगा सेशन में. यस, तो आप मुझे अपना सिटी का नाम बताइए कि आप कौन सी सिटी से जुड़े हुए हैं और आपकी प्रेगनेंसी का कौन से महीने में है. द मंथ ऑफ योर प्रेगनेंसी, प्लीज शेयर इट इन द चैट. जैसे मैं इंदौर से जुड़ी हुई हूँ, मेरा नाम हंसा है. वैसे आप कहाँ से जुड़े हुए हैं और आपके शहर का नाम आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए. एंड एट द सेम टाइम आल्सो शेयर मी कि कौन सा महीना चल रहा है आपकी प्रेगनेंसी का, व्हिच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी दैट यू आर गोइंग ऑन. अपनाली जी पुणे से हैं और वो 6th मंथ में है. ग्रेट. Okay. Other people also, let's make it little interactive. हाँ, थोड़ा सा एक दूसरे से बातचीत करते करते सेशन को आगे बढ़ाते हैं. पारुल जी राहुल केला से है और 7th मंथ में है. Amazing, nice. So we are having a little bit of mixed audience. हर एक trimester से I'm assuming people have joined. Yes. Okay, other people also just write it in the chat box. Don't worry, this is a safe place where you can actually write. Up सब कुछ अपनी experiences, whatever the question is being asked, you can just write it in the chat box. No problem. प्रीति जी जुड़ी है तमिलनाडु से और आप 7th मंथ में. That's nice. Great, great. मनाली से भी है. Amazing. 7th month of pregnancy. That's great. Super. Oh, sorry, your name is Manali. I'm so sorry. I'm so sorry. You're from Mumbai and you're in the 7th month of pregnancy. Great. All righty, that's good. हमारे पास mixed audience है, काफी अलग-अलग जगह से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. So Hindi and English both is comfortable with everyone, है ना? I hope that's not a problem. Okay. So what you will walk away with by the end of this session, we'll be seeing on different
things. We'll be looking on some different aspects of the pregnancy, and we'll look into the tools which will actually help you to, make this pregnancy journey, this journey quite beautiful and quite valuable, right? So by the end of the session, we'll be looking into the genetical programming of your baby. Build your baby's health in 20 minutes per day. 6-part formula for a stress-free, joyful 9 months. Of course, आपके कुछ महीने तो already हो गए हैं, but that's good. Whenever you start is a good step. जब भी आप कोई शुरुआत करते हो, जिस भी दिन से करते हो, that's good enough. यस तो हम ये सारी चीजों के बारे में आज हम सेशन के एंड में आप कुछ ना कुछ इन सारे टॉपिक्स में से कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे यस तो मेरे साथ सेशन में एंड तक बने रहिएगा स्टे विथ मी टिल द एंड यस तो मैं आपकी मॉडरेटर हूँ आज की आई बी योर मॉडरेटर माय नेम इज हंसा I'm a certified pre and postnatal yoga trainer. I'm also a certified kids yoga trainer. I'm a meditation trainer with the Art of Living organization. And also I am an Ayurvedic nutritionist. Yes. So initially मेरा जो background है वो I have done my bachelor's and master's in economics, but somehow I was more inclined towards the health sector. मुझे health sector में ज़्यादा interest था. How can I help more people? मेरा जो focus था वो ज़्यादातर उसी के ऊपर था. When I was studying economics at that time also, मुझे yoga और fitness में बहुत interest था. And that's when I decided somewhere while I was doing my master's that I want to become a yoga trainer. And that's when I started my journey. After becoming a yoga trainer, I realized that not just I want to cater different sections of society. Then I did my pre and postnatal yoga training. And after that, I realized that kids are also amazing to work with. So I also did my yoga teachers training program in kids as well. Okay, so the magical pregnancy movement जो वर्कशॉप में आपने जिस वेबिनार में आपने एनरोल करा है वी हैव सर्व्ड मोर देन 10,000 mothers. We have reached to 15 cities and 50 plus healthcare providers हमने trained करा है. It was magical. So before moving ahead, I would like to share a short testimonial of the mothers, those who have joined us. जो जिन्होंने हमारे साथ पहले ज्वाइन करा हुआ है उनका एक छोटा सा हम वीडियो देखते हैं. It was magical. It was spiritual. I was a lot stronger mentally. And when the hormones are really haywire in the pregnancy, these classes help me calm down and stay sane. Today, when my baby is 2 months old, I really feel like I have connected with her since she was in my womb, because I communicate with her and I feel the connect, I feel the changes, and everyone around me, like my parents and all, also see that how much these classes have been effective in my journey and even today. So here are some testimonials of our mothers, those who have been with us in their pregnancy, during their journey. These are some testimonials that the mothers have shared with us, and we have thousands of life transforming experiences like this. And also, you can also be a part of these videos and testimonials where you can also experience the things that these mothers have experienced so far. Yes. So, jab we get to know that, yes, there is someone, a small person is going to arrive in this world. There are a lot of doctors around us. Of course, out of curiosity, खुशी के उससे हमें बहुत लोग हमें बहुत सारे advices देते हैं. Be it our parents, neighbors, or whosoever is around us, हमें कुछ ना कुछ छोटी छोटी एडवाइसेस देते रहते हैं. यस देखा जाए तो हमारे घर में हमारे आसपास हर कोई डॉक्टर बन जाते हैं उस टाइम पे जब हमें पता रहता है कि हमारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला. यस बट हमारी जो टीम है मैजिकल प्रेगनेंसी की उसमें we have real doctors working with us. So let's meet the team of the magical pregnancy. We have Dr. Ankita.
शी इज सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट जिनके पास 30+ ईयर का एक्सपीरियंस है. देन वी हैव डॉक्टर मीनल, इन्होंने मास्टर्स एमएससी किया है योगा में. शी इज आल्सो सर्टिफाइड प्री नेटल योगा ट्रेनर. देन वी हैव डॉक्टर शिवानी, शी इज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर. Then we have Ankita ji. She's a fetal brain development expert. And then, of course, it's me. मैंने आपको पहले मेरे बारे में बता दिया. मेरा नाम हंसा है और I'll be the moderator for the session. Okay. So, as I told in the beginning कि हम थोड़ा सा सेशन को इंटरैक्टिव रखेंगे. मैं यहाँ से कुछ पूछूंगी. आप प्लीज मुझे चैट बॉक्स में थोड़े थोड़े अपने जो भी क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है वो आप मेरे साथ शेयर करिएगा. यस, लेट्स मेक इट लिटिल इंटरैक्टिव. खाली मैं बोलती जाऊं और आप सुनते जाएं, इट विल बी क्वाइट बोरिंग. सो आप भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा इंटरैक्ट करते रहेगा सेशन के बीच में, ठीक है. सो व्हाई प्रेगनेंसी गाइडेंस एंड व्हाई नाउ? टेल मी व्हाट चेंजेस justice. So, what changes were there when you got pregnant? Let me just see the chat box. Mood swings, morning sickness, nausea, correct. Psychological changes, hormonal changes, lots of good. Back pain रहा होगा, है ना? Swelling होगी पैरों में. We go through so many changes when we are heartburn, tired, correct. Lower back issues, lots of food. Okay. Anything else that you want to share? कुछ और share करना चाहते हैं यहाँ? What are the changes after you got pregnant? Some kind of emotional turbulence. See, very so apt. Parulji, don't do this, don't do that. So many things people tell us. And that's what I was saying. Out of curiosity, out of excitement, people हमारे आसपास सभी लोग डॉक्टर्स बन जाते हैं. ऐसे खाओ, वैसे मत खाओ, ये खाओ, वो मत खाओ, है ना? Weight gain, okay. Baby movement, so happy, correct. Yes, somewhere you find कि कुछ changes जो है वो अच्छे भी है और कुछ changes जो ऐसे हैं वो आपको कभी ना कभी परेशान कर रहे होते हैं, आपको stress दे रहे होते हैं. Yes, agreed or not? Yes, डॉक्टर विजिट्स है, स्कैन्स है, टेस्ट है, रिपोर्ट्स है, सप्लीमेंट्स है, वाइटामिन्स है, कौन सा खाना चाहिए, क्या कौन से खाने से दूर रहना चाहिए, मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू एंटर द थर्ड ट्राइमेस्टर, जब आप तीसरे ट्राइमेस्टर में होते हैं, एंड स्पेशली व्हेन इट्स द 8th month ऑफ प्रेगनेंसी. ऐसे बैठो, वैसे मत बैठो, ये चप्पल पहन के मत जाना बाहर. यस, घर के बाहर जाने के लिए भी हमें रहता है कि कोई जाने देगा या नहीं जाने देगा. लॉट ऑफ चेंजेस दैट a mother has to go through. Yes. You want the best for your baby in your pregnancy, and are you already doing so many things? आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के लिए जो भी हो वो एकदम बेस्ट. Yes, agreed. आप मेरे साथ अग्री करते हैं कि नहीं? If you agree with me, just share me a thumbs up. But Raj, today we'll speak about a single biggest invisible factor constantly shaping a baby 24/7, which we often ignore. आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक ऐसे फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो आपके बेबी को शेप कर रहा है 24 घंटे. बट हम शायद उस फैक्टर के बारे में, उस इनविजिबल फैक्टर के बारे में हम शायद जानते नहीं. और मान लो कभी जानते भी हैं तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली वेयर वी हैव टू. What do you think that is? Any guesses in the chat box? Just let me know. आपको क्या लगता है, क्या वो फैक्टर हो सकता है जो हम मिस कर रहे हैं या जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं? Anything, it could be anything. There is no right or wrong answer. Just
Write it down in the chat box, whatever you feel. Positive mindset, environment, okay. Anything else? Do you feel that husband's role, okay. 6-month ending, time, foot swelling starts, why please? We'll come into the questions later. Okay, I'll give you the answer. First, let's watch one video. It's not only the food and water that gets passed on through the umbilical cord when the mother gets pregnant. It's every thought, every fear, every experience, every emotion. If she's angry with her in-laws, if she's angry with her parents, if she's angry with her husband, that child will carry that energy of anger. भले वो उसके कर्मा में नहीं है, that's a secondary thing. But that child will be an angry child. If suppose the mother is working and she faces rejection at work, and she can't deal with the rejection easily, that fear of rejection will get passed on to the child. If the mother has gone through any form of physical, verbal abuse or sexual abuse, ऐसा बहुत होता है, the child will grow up fearing abuse. After watching the video, what are you getting something? Where we are leading this to? हम कहाँ जा रहे हैं? After watching the video, did you get an idea of what was that invisible factor that we ignored? Any guesses? You want to guess anything, or you want to say anything after watching the video? Experiences of daily life. You know what? Emotions play a very important role. So true. So आप जो भी है, अगर आप stressed हो तो वो stress भी आपके बच्चों के अंदर जा रहा है. Yes, any kind of emotion that you experience is actually what is being passed through the baby. Now answer me this question. On a scale of 1 to 10, how well are you managing pregnancy stress and anxiety? A, B, C में से आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको क्या लगता है, आप कितने अच्छे से ये 9 महीने में अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हैं. अगर आपको लगता है बहुत अच्छे से कर पा रहे हो तो A. B करना अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कभी अच्छा है कभी नहीं. And C if you feel like that you are stressed most of the time. हाँ, C, B, B, very stressed, okay. B, B. So I could say that we have a good amount of percentage at B. Some days good, and some days we are quite anxious about it. Now let us see what modern science has to say about this. आपका जो stress है, अगर आप उसको अच्छे से manage नहीं कर पाते हो, so what do you think? Let's see what the modern science is saying about. Prenatal stress alters gene expression, influencing a child's emotional regulation and stress response. जब आप बहुत स्ट्रेस लेते हो तो वो आपके बच्चे का जो जीन है उसको अल्टर कर देता है. Influences a child's emotional regulation and stress response. That's what we heard in the video. वीडियो में भी उन्होंने कहा ना कि अगर कभी मम्मी ने किसी भी टाइप का रिजेक्शन या अब्यूज को फेस करा हुआ है, बच्चे के अंदर वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. Why? Because the environment around that baby, that womb, was like that the baby catches it. So it's really important कि हम हमारे स्ट्रेस पे, हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे आसपास हमारा जो वातावरण है उसके ऊपर हम ध्यान दें अच्छे से. स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जो है वो हमारा स्ट्रेस हार्मोन उसी को बोलते हैं. ट्रेवल्स टू द बेबी थ्रू प्लेसेंटा. हायर इमोशनल सेंसिटिविटी, increased reactivity to stress, difference in attention and self regulation. Can you see? आपको ये पिक्चर में बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि if the mother is stressed, the baby is also feeling the stress. The picture is quite clear enough to
पास द मैसेज की जैसा जो इमोशंस आपने फील किए हैं वो सारे इमोशंस कहीं ना कहीं आपका बच्चा भी फील कर रहा होता है. यस. नाउ व्हेन यू ट्रैवल, जब बच्चे के पास हैप्पी हार्मोन्स जाते हैं थ्रू द प्लेसेंटा, तो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है. सेरोटोनिन जो मूड स्टेबलाइजर हार्मोन होता है वो भी अच्छा होता है. देन एंड्रोफिन्स नेचुरल पेन रिलीफ जो रहते हैं वो भी ठीक हो जाता है. सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज इट अ गुड आइडिया टू pass happy hormones to the baby? Yes. What your baby experiences: emotional security, improved brain growth, bonding, calmer nervous system. जब आप हैप्पी हॉर्मोन्स बेबी को पास करते हो तो ये चार तो होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे होते हैं जो आपके बेबी तक पहुंचते हैं. Yes, so don't you think it's a good idea to, manage your stress well during this 9th month of pregnancy? See, आप बच्चे को जब तक अंदर है तब तक आप उसको शेप कर सकते हो, but once the baby is actually in front of you, आप कर सकते हो चीजें, बट वो चेंजेस आपको शायद नहीं मिलेंगे जो आपका बच्चा एक बार आपके पास आ गया. यस, सो इट्स गुड टू, आजकल के बच्चे कहते हैं कि it's good to shape your baby when it is in the womb itself. Now we listen to one more video of what the shaping or educating the child inside the womb, why it is so important. Let's understand who this video. आजकल के बच्चे कहते हैं कि एंजाइटी फील हो रही है. एक बहुत बड़ा पावरफुल संस्कार होता है गर्भ संस्कार. संस्कार जो वूम्ब के अंदर बनते हैं. हम सब ने सुना है अभिमन्यु गर्भ में था, उसने सुन लिया था कि चक्रव्यूह के अंदर एंटर कैसे करना है. इतने सालों बाद जब वो युद्ध में था वो चक्रव्यूह के अंदर घुस गया. चक्रव्यूह से बाहर निकलना सुना नहीं था, चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाया. इसका मीनिंग है सोल इन द वूम्ब इज कैचिंग एवरीथिंग. नाउ विजुअलाइज एक्सपेक्टिंग कपल की लाइफ कैसी चल रही है. भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कहते हैं स्ट्रेस इज नॉर्मल. क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या कंज्यूम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं अभी. तो ये सारी चीजें उस सोल के संस्कार बना रही है. A lot of children are born emotionally weaker. पहले हम ध्यान रखते थे कि चाइल्ड शुड बी born physically healthy, very important. अब यह ध्यान रखना चाहिए कि चाइल्ड शुड बी born emotionally strong. वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि गर्भ संस्कार का क्या इम्पोर्टेंस है. यस, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी आए, बट क्या सिर्फ फिजिकल टेस्ट जो है दैट इज इनफ? नो, राइट. बच्चे का मेंटल लेवल पे भी डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. And nobody else, it is you who can do it. The mother has that power to do it. Yes. Okay. Okay. Now, so जैसे बताया उन्होंने कि स्ट्रेस आजकल people think that it's quite normal. Actually, it's not. इतना नॉर्मल नहीं है. हमने अभी तक ये समझा है कि अगर आप स्ट्रेस में हो तो वो आपके बच्चे तक भी पहुंच रहा है. तो आपको क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में? What do you think? What we can do about this? Any inputs that you want to give? स्ट्रेस है, हमें पता है ये चीज, हमें पास नहीं करना है बच्चे को, हमें ये भी पता है, बट कैसे करना है? एनी आइडिया? डू यू रियली, व्हाट डू यू थिंक व्हाट वी कैन? थिंक पॉजिटिव. ओके, पारुल जी सेज थिंक पॉजिटिव. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग you want to add? So what's your biggest source of stress during the pregnancy? इनमें से आपको ऐसा क्या लगता है कि सबसे बड़ा सोर्स जो है वो स्ट्रेस का क्या है प्रेगनेंसी में?
Engage into other activities. So far good. Doctor के reports, conflicting advices, fear of delivery, body changes, work pressure, am I doing good? Am I doing enough for my baby? Family expectations. आपको क्या लगता है इसमें से सबसे बड़ा सोर्स क्या हो सकता है स्ट्रेस का? You can say all also, or you feel like कि नहीं इसमें से कुछ चीजें जो है which I am able to relate. Again, let's make this little interactive. Whatever you feel like, you can just write it in the chat box and we are there to listen. Manvi ji says it's all. Okay, बाकी लोगों को क्या लगता है? What other mothers are feeling? कि इसमें से क्या हो सकता है? Point 3 and point 4. Fear of delivery and body changes. Okay. Anything else that you want to add? आप कुछ और add करना चाहते हैं इसमें? Point number 3, fear of delivery. हाँ, जैसे जैसे हमारा pregnancy का डिलीवरी का टाइम आता जाता है, ये फिर fear of delivery is very normal in mothers. Okay, anything else? किसी को कुछ और लग रहा है? Last option, family expectations. Okay. Past bad experiences. Okay. 7 and 3. 3 is fear of delivery. Family expectation. Reports. Yes. हम सभी को कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी के लिए वर्क प्रेशर है. ओके ओके. So could you see that somewhere or the other हमें किसी ना किसी चीज का stress है during the pregnancy? We have such stresses and that's good. इन सारे stress को we can actually work on this stress. जो हमारा cortisol hormone है, हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं. I'll let you know how we are going to work on our stress with some tools. Of course, don't worry. I'll guide you how to do that. But before that, let's watch this video. What is stress? Stress is equal to external pressure upon internal strength. External pressure is 10 and internal strength is 2. So what is my stress level? 5. You can do nothing regarding the external pressure because it's in the hands of destiny, karma, whatever you say. But the denominator, internal strength, that is in your hands. So I increase my internal strength by Gnan and by Dhyan from 2 to 5. Now tell me what is my stress level. So simple. Not touching the external pressure, increasing your internal strength. This is spirituality. Nice video, na? Explaining about what is actually stress. हाँ? जब बाहर की बहुत सारी परेशानियां हमें परेशान करती हैं तो हम उसको स्ट्रेस बोलते हैं. यस, ये जितने भी हमने जितने भी स्ट्रेस देखे, डॉक्टर की रिपोर्ट्स, कंफ्लिक्टिंग एडवाइसेस, डिलीवरी, बॉडी का चेंज होना, वर्क प्रेशर होना, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, ये सारी एक्सटर्नल चीजें हैं जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं. हमें जब वो बॉदर करने लग जाती है तब हमें स्ट्रेस है ना. बट क्या हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमें क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स. हमारे जितने भी वेल विशर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स करो. बट क्या स्ट्रेस कोई स्विच है जिसे जब चाहे तब हम ऑन कर सकते हैं, जब चाहे तब हम ऑफ कर सकते हैं? ऑफ कर जाए, चलो स्ट्रेस मत हो. इज इट दैट सिंपल? डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये कोई स्विच है जिसे आप ऐसे फ्लिप कर सकते हो, जब चाहे तब चालू कर दो, बंद कर दो? पॉजिटिव सोचना है ये हमें पता है, बट कैसे करना है nobody really actually tells us. What do you think कि सिर्फ बोल देना just relax is something as easy as to switch off a switch? What do you think? Don't you think when you have correct tools and techniques that can help you to reduce your stress levels? Yes.
We need tools and techniques to increase our internal strength and not just motivation. खाली बोल देने से कि हाँ आप आराम से बैठो, पॉजिटिव सोचो, तो चीजें इतनी आसान हो जाएंगी, बट ऐसा होता नहीं है. अगर हमारे पास उन सारी चीजों को, ये सारे स्ट्रेस को कंट्रोल करने का या उसे थोड़ा कम करने के लिए हमें कोई टूल्स एंड टेक्निक्स तो चाहिए ना, ताकि हम हमारे अंदर का जो स्ट्रेंथ है हम उसको बढ़ा सकें. मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए आपको यूट्यूब पे एन नंबर ऑफ लिस्ट मिल जाएंगे, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज करेक्ट टूल्स एंड टेक्निक्स टू इंक्रीज द इनर स्ट्रेंथ. यस, यू अग्री विथ मी और नॉट? आप मुझसे अग्री करते हो या नहीं, है ना? So in today's webinar, we'll be learning the correct tools and techniques. We'll be looking into few tools and techniques that can actually help you to reduce your cortisol hormone, that is the stress level. Are you all excited for this or not? If yes, then write ready in the chat box. अगर आप excited हैं मेरे साथ वो tools and techniques को unlock करने के लिए, so write ready in the chat box. Come on, I want to see everybody typing ready in the chat box. Ready, ready, ready. Manvi is super ready. Super ready. Okay. So, here are some 7 practical, easy to implement tools. Even if you practice 2 to 3 tools regularly, that can change how you feel during the pregnancy. हम चाहते तो हैं कि हम पॉजिटिव सोचें, हम चाहते तो हैं कि हम स्ट्रेस ना लें, पर हमें पता नहीं है कैसे करना. So here is the answer उस पता नहीं का. When you start applying these tools and techniques to your regular day-to-day life, yes, which will actually help you to uplift yourself and feel very good during your pregnancy. ठीक है, हम इन 7 प्रैक्टिकल और इजी टू इम्प्लीमेंट टूल्स के बारे में देखेंगे. The first tool is the 90-second breath rest. See, जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, when you come into the 3rd trimester, 7th, 8th और 9th month of pregnancy में आपको श्वास लेने में breathing is quite difficult at that time. Yes, because the belly is increasing, there is a less space for lungs to expand and contract. इस वजह से क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है. Yes, have you experienced this or not? Those who are in 7th, 8th and 9th month of pregnancy. Do you agree with me or not? Yes, if yes, then show me a thumbs up in the chat box. हाँ, प्रियंका जी is saying yes. तो हमें क्या करना चाहिए? आप क्या कर सकते हो? You can actually practice some pranayams. आप कुछ प्राणायाम practice कर सकते हो. Specifically focusing on the thoracic region. Abdomen पे ज़्यादा pressure नहीं देना है. You need to work on the thoracic region. There are some, of course, there are some different techniques, some different mudras that you can try, but first focus on the pranayam. आप जितना ध्यान अपने प्राणायाम पे देंगे, उतना ज़्यादा अच्छा आप breathe कर पाएंगे. Yes. So when you just simplify the word pranayam, prana means the life force, जिसके ऊपर आप जिंदा हैं, and ayam means to channelize. So when you channelize the life force energy, that's when you feel uplifted. And so there are simple breathing techniques. One of them is the thoracic breathing that you can try right now. So what you have to do is you can just join your palms like this. As you breathe in, you take your palms at the back. हाथों को पीछे लेके जाना है. You need to expand the chest. And as you breathe out, bring your hands together. A very simple and very effective thoracic breathing. When you just practice it for 90 seconds a day, see how your body, your breath has such an immense power to uplift your energy and reduce the cortisol hormone, that is the stress. Yes, you want to try it now? We can try it. हम थोड़ा सा try कर सकते हैं इस चीज को. So the thoracic breathing that I taught you right now, we can do that. Just take 10 long deep breaths in and out. Of course, the pressure, the most of your, the area of impact should be your thorax, the chest region. A very less pressure should be on the belly. We can try 10 breaths. जितना हो सके उतना
आप सांस लीजिए और छोड़िए. According to your lung capacity, you can do it. So let's join our palms like this. हाथों को जोड़ के रखते हैं. As you breathe in, take your hands at the back. Breathe in, expand the chest. As you breathe out, bring your hands closer together. Breathe in, expand. As you breathe out, bring your hands close. Continue at your own pace with a smile on your face. See why it is known as, हम स्माइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुस्कान. जो मुंह से कान तक जाए वही मुस्कान. So you should smile a lot. जितना आप मुस्कुराएंगे उतना आपके बच्चे के लिए अच्छा रहेगा. And relax. Was it good? Yes, nice. A little bit of pranayam, like दिन भर में अगर आप 1 या 2 बार भी इसको कर लेते हैं ना, you feel so much energized, you feel so good. Yes, did you feel nice? अच्छा लगा करके? A simple thoracic breathing. Yes, if you liked it, just send some hearts or whichever emoji you feel like you want to share. Okay, we'll move on to the next. Stress primarily comes from not taking action over something that you can have some control over. So if I find that some particular thing is causing me to have stress, that's a warning flag for me. What it means is there's something that I haven't completely identified, perhaps in my conscious mind, that is bothering me, and I haven't yet taken any action on it. I find as soon as I identify it and make the first phone call or send off the first email message or whatever it is that we're going to do to start to address that situation, even if it's not solved, the mere fact that we're addressing it dramatically reduces any stress that might come from it. So stress comes from ignoring things that you shouldn't be ignoring, I think in large part. So stress doesn't come. People get stress wrong all the time, in my opinion. वीडियो ना जिसमें स्ट्रेस के बारे में हमें पता चल रहा है कि जब हमें पता है हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं पर हम जब नहीं करते that bothers a lot. वो हमें ज्यादा परेशान करता है. So the tool number 2 is the control filter. अच्छा, आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो क्या? Of course कर सकते हो. Can you influence this to an extent? Yes. Do I need to let this go? Of course. Clarity. जब हमें किसी चीज के ऊपर क्लैरिटी नहीं होती है तब हम ज्यादा स्ट्रेस होते हैं. अच्छा, जैसे लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. आपके कंट्रोल में क्या क्या है ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी? फूड आपके कंट्रोल में है, स्लीपिंग पैटर्न्स आपके कंट्रोल में है, बॉडी का मूवमेंट आपके कंट्रोल में है, ब्रेथ वर्क आपके कंट्रोल में है. So जब हमारी चीजें में कंट्रोल होती है, when we have an idea, when we are clear of what we can actually do, we are not stressed. पर जब हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है और मान लो पता चल भी जाता है पर हम एक्शन नहीं लेते हैं उस चीज पर, that's when stress, it just comes in the entire system and makes you a little dull. So clarity reduces stress. So चीजों के ऊपर clarity लाना बहुत जरूरी. Now, what are the things that are stressing you out that you can actually control and take action? Share your insights in the chat. आपको ऐसा कौन सा ऐसा स्ट्रेस है जो आपको लगता है कि आप उसका कंट्रोल आप ले सकते हैं? जैसे कि as I told, food is in your control, but you know कि हाँ ये मैं कंट्रोल करूंगी लेकिन मैंने अभी तक करा नहीं है, इसकी वजह से मुझे स्ट्रेस आ रहा है. And it could be any activity, कुछ भी हो सकता है. Be it phone scrolling और वर्क का प्रेशर है, आपको पता है कि आप इसके बारे में कुछ कर सकते हैं पर आपने अभी तक कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं जिससे आपका स्ट्रेस कम हो सके. Just share your insights in the chat box. What is it that's bothering you but you haven't done? Doctor appointment I need to fix. Okay. और क्या है? जैसे मानवी जी ने बताया,
what other mothers are feeling. आपको ऐसा क्या लग रहा है? ऐसा कौन सा ऐसा एक्टिविटी है जो आपको लगता है कि आपके लिए स्ट्रेसफुल है, आपके कंट्रोल में भी है, पर आपने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? इज द क्वेश्चन क्लियर? शेयर योर इनसाइट्स इन द चैट बॉक्स. आपको क्या लगता है? Guests coming to home need to ask husband for help. Okay. Other moms, what do you feel? आपको क्या लग रहा है? What are the activities that have actually stressed you? You can actually control and take action on. आपके खाने को लेकर हो सकता है, आपके स्लीप पैटर्न को हो सकता है, कोई भी चीज जो आपको बॉदर कर रही है पर आपने अभी तक उसको फिक्स करने के लिए कुछ करा नहीं. जब तक मॉम्स लिख रही है, let's move to the next tool, that is gentle body movement. Of course, during the pregnancy, body movement is really important. ठीक है, कुछ लोगों को लगता है प्रेगनेंसी एक बीमारी के जैसा है, you sit at one place and do nothing. But actually, it's the other way around. You need to be little active, not just for you, but for the baby also. So if you're not doing anything, if your body doesn't have a movement, then start going for slow walks. रात को खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक पे जाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा बहुत बॉडी का स्ट्रेचिंग करना चाहिए, शोल्डर मूवमेंट्स करना चाहिए, ऑफ कोर्स विद कंट्रोल, ब्रेथ मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है. सो अब जितना बॉडी को अच्छे से मूव करेंगे इन अ कंट्रोल्ड मैनर, उतना आपको भी फायदा होगा, आपके बच्चे को भी फायदा. That's the third tool of the third tool and technique to actually reduce the stress. Fourth is mantra healing. This is an amazing and such a powerful tool, I'll tell you. Recently I was reading a newspaper where I found, उस न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था कि आजकल के बच्चे जो हैं, स्पेशली व्हेन यू सी पीपल इन आईआईटी, जो बच्चे पढ़ते हैं, आईआईटी आईआईएम वाले जो बच्चे रहते हैं, उनके ऊपर रिसर्च हुआ था कि व्हेन दे एक्चुअली स्टार्टेड लिसनिंग टू म्यूजिक, कुछ ऐसा साउंड हीलिंग वाली चीजें जब वो करने लगे थे, दैट्स व्हेन दे रियलाइज कि उनका मेमोरी जो है वो काफी हद तक अच्छा हो गया है. उन्हें ये चीज दुनिया में आने के बाद पता चला, बट आपके बच्चों को जब वो अंदर है, वो चीज को वो तभी से समझ सकते हैं. Yes, so music has such a powerful impact on the baby, on the mother's mind. ठीक है, instant energy, instant calmness feel होता है. जब आप कुछ ऐसे chants को सुनते हो तो आपको अच्छा लगता है. So throughout the 9 months of pregnancy, we have different rags that have different impacts on the baby. जैसे अगर आप first month of pregnancy में है तो आपको भैरव राग सुनना चाहिए. ठीक है, so as we have a list of these ragas that actually help to uplift the mood. Actually, can we play a little bit of chanting here? Is it possible? Give me a moment. Huh? Give me 1 minute. Let me. Yeah, okay. हाँ, so जब तक हम शेयर हो रहा है एक चैंट और ये सारी चीजें, we'll just prepare our body of it. हम थोड़ा सा अपने आपको उसके लिए प्रिपेयर कर लेते हैं. Just simply sitting won't help you. Let's prepare our body for that. ठीक है? So what we'll do is we'll just simply close our eyes. थोड़े से 5 लंबी और गहरी सांसें लेंगे. Of course, the movement has to be from the thorax region. The thorax region से करेंगे. So we'll just sit comfortably, easily. Take a wall support or a chair support, whatever is comfortable for you to sit. पैरों को आप चाहे तो थोड़ा सा आगे की तरफ फैला के बैठ सकते हैं. ठीक है, दोनों हथेलियों को ऐसे घुटनों पे रखेंगे, आसमान की ओर खुला हुआ. There is also a scientific reason why you should sit like this. जब आप ऐसे बैठते हो हथेलियों को खोल कर, तब आप अच्छे से और ज्यादा लंबी गहरी सांस लें. ठीक है, so we'll just close our eyes. We'll listen to the chants that is being played.
और आप खाली वो चैंट को सिर्फ सुनना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ठीक है? आराम से खाली आंखें बंद करते हुए विथ अ स्माइल ऑन योर फेस जस्ट कीप लिसनिंग टू दोस चैंट्स, ठीक है? गुड आइडिया टू डू, you'll experience कि ये chants का इतना importance क्यों, you'll get to know that, ठीक है? So we'll just close our eyes, sit with your palms on the knees facing towards the ceiling. Let's close our eyes. Take a longer deep breath in and breathe out. Take a gentle attention on the breath. अपनी श्वास पे ध्यान ले जाएंगे. Just keep your eyes closed. आंखों को बंद ही रखेंगे. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। Long deep breath in, breathe out gently with a big smile on your face. You may open your eyes. Was it good? अच्छा लगा? See, not just this chant. आप कोई सा भी chant सुन सकते हो. जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया था कि हर एक ट्राइमेस्टर के ऊपर we have different rags that help you to, uplift yourself. So कभी भी आपको ऐसा लग रहा है दिन भर में कि your mood is not good, you are feeling quite anxious, agitated, ओम नमः शिवाय chant लगा दिया, कृष्णाय वासुदेवाय लगा दिया, या कोई सा भी, आप इनमें से कोई सा भी एक राग चुन सकते हो. You just listen to that rag. Has immense music has such a powerful impact on your brain. It develops your brain in different manners. Imagine when you do it on regular basis, how extraordinary your baby's brain would be. Yes. So start working on little things that is being discussed in the webinar. The fifth tool is the womb communication, गर्भ संवाद. आप कितना अपने बेबी के साथ इमोशनली कनेक्ट फील करते हैं, वो है आपका फिफ्थ टूल. ज्यादा डराएगा ना, अपने दिल पे याद रखना और बोलना ऑल इज वेल. फिर से बोलो ऑल इज वेल.
All is well. All is well. Are you getting it? What am I saying? मैं क्या बोल रही हूँ समझने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जितना आप अपने बेबी के साथ कनेक्ट कर पाते हो उतना आपके और आपके बेबी के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होते जाता है. दिस इज अ वेरी फेमस क्लिप फ्रॉम द मूवी थ्री इडियट्स. जैसे ही उसने ऑल इज वेल बोला द बेबी किक्ड. ऑफ कोर्स दैट्स अ पार्ट ऑफ द मूवी, बट देयर हैव बीन सम एक्सपीरियंसेस. ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आपने एक्चुअली जब आप आपके बेबी के साथ बातें कर रहे हो, यू मस्ट हैव फेल्ट सम कनेक्शन विथ योर बेबी. But we miss on to one of the most important aspect during the pregnancy, that is communicating with the child, connecting with the life that is inside. Now give me an answer to this question. How many times a day you consciously connect with your baby? आप कितनी बार दिन भर में अपने बच्चों के साथ बात करते, अपने बेबी के साथ बात करते हो? Is it once, twice, thrice? दिन भर में 5 बार या कुछ भी होता है तो you just speak to your baby. कितनी बार आप अपने बच्चों के अपने बेबी के साथ कनेक्ट कर पाते हैं? Let me know in the comment box. Chat box में आप मुझे लिखकर बताइए. None. Okay. Others, आप कितनी बार कर पाते हो? एक बार भी करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है. अभी चैट बॉक्स में लिख के बता. श्रीदेवी भी does 8 times a day. Okay, that's good. What about other moms? आप कितनी बार अपने बच्चों से बात करते हैं? नम्रता जी 3 से 4 बार करती हैं. ओके. You know what? There was a video which mentioned tell us about कि जब आप 7th month of pregnancy में होते हैं ना, तो जितना आप सुन पा रहे हो उतना ही आपका बच्चा भी सुन पाता है. 7th month of pregnancy के टाइम पे जितना एक अडल्ट सुनता है उतना ही एक बच्चा जो माँ के अंदर है वो भी उतना ही सुन पाता है. So it's really important that you connect with the baby, consciously connect with the baby. इसलिए तो 7th month में we have baby shower, क्योंकि बच्चे को वो सारी आवाजें, चूड़ियों की आवाजें, ढोलक की आवाजें, जो आसपास जो अच्छा गाना हो रहा होता है, नृत्य हो रहा होता है, वो सब उसे बहुत अच्छा लगता है. वो सुन के वो खुश होता है. इसीलिए आप जितना हो सके उतना अपने बच्चों के साथ, अपने बेबी के साथ कनेक्ट करिए, कॉन्शियसली उसके साथ बातें करिए. दिन भर में भले आप 2 बार कर पा रहे हो, दैट्स ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद समथिंग. अगर आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो आज से शुरू करिए. नॉट जस्ट यू, आई वुड सजेस्ट कि आपके पार्टनर को भी आपके बच्चे के साथ कनेक्ट, वो बॉन्ड फील होना चाहिए, कनेक्ट फील होना चाहिए. मॉडर्न साइंस भी यही कहता है. मॉडर्न साइंस ऑल्सो confirms the ancient wisdom. हम ये सारी चीजें जो आज मॉडर्न साइंस कंफर्म कर रहा है वो बहुत पहले हमारे एंशिएंट टाइम्स में सारी चीजें बोली गई है, करी हुई है, लिखी हुई है, एंड हैव बीन प्रूव्ड नाउ कि जब वीक 20 रहता है आपकी प्रेगनेंसी का, बेबी रिस्पॉन्ड्स टू द साउंड वाइब्रेशन एंड बिगिंस रिकॉग्नाइजिंग वॉइसेस. 7th month में जैसा मैंने कहा कि जितना आप सुन पा रहे हो उतना ही आपका बच्चा भी सुन पा रहा होता है. 24th week में baby clearly recognizes familiar voices, especially mother and father. तो जितना आप बात करते हो उतना ज्यादा 24th week तक वो एकदम अच्छे से बता सकते हैं कि ये मेरी मम्मी की आवाज है और ये मेरे पापा की आवाज है. 3rd trimester में कॉम्प्लेक्स इमोशनल एंड हार्मोनल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है. इसीलिए आप 6th month of pregnancy, 6th या 5th month of pregnancy से ही आप अपने बच्चों के, अपने बेबी के साथ बात करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब तक आप वीक 24 पर आओ, ताकि तब तक आपका बच्चा जो है वो आपकी भी आवाज पहचान सके, साथ साथ में आपके हस्बैंड की, उसके पापा की भी आवाज को पहचानने लगता है. While in the womb, baby begins learning languages from their mothers. So आपको नहीं लगता है कि आपको अपने बच्चों के साथ, अपने बेबी के साथ फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करना चाहिए? डोंट यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू डू दैट?
Yes, लगता है कि नहीं लगता है? If you feel that, just give me a thumbs up in the chat box. सोचिए बच्चा Yes, it's a good idea, no? Let's listen to um, one more video which will give some valuable insights. सोचिए बच्चा कोख में आने से पहले पिता के स्पर्श से बनता है। यही स्पर्श बच्चे का 50% डीएनए और फीचर्स तय करते हैं। मतलब पिता का काम बच्चा होने के बाद नहीं बल्कि कंसेप्शन से शुरू हो जाता है। आपकी सोच, आपका स्ट्रेस और आपकी डेली हैबिट्स बच्चे की नींव रखती है। सिर्फ माँ का खुश होना काफी नहीं है, पिता का भी शांत और अनुशासित होना बच्चे के संस्कार को तय करता है। है ना? So, जितना इम्पोर्टेंस एक मदर का होता है प्रेगनेंसी के उसमें, उतना ही इम्पोर्टेंस एक पापा का भी होता है। See, everything is connected. ठीक है, बच्चा भी कनेक्टेड है, मम्मी भी कनेक्टेड है और पापा भी कनेक्टेड है। हर एक, इट्स लाइक एवरीथिंग इन वन सर्कल। सर्कल के बाहर कुछ नहीं है, सब एक ही उसके है। सो साइंस ने ये प्रूव भी करा है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं पिता के अंदर भी। बिफोर प्रेगनेंसी टेस्टोस्टेरॉन्स कैसे थे और आफ्टर प्रेगनेंसी कैसा था, मतलब आफ्टर नहीं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैसा था। ऑक्सीटोसिन जो हैप्पी हार्मोन होता है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फादर्स के अंदर वो उसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, जो प्रेगनेंसी के पहले थोड़ी कम रहती है। नाउ द सिक्स्थ टूल इज द हेल्दी रिलेशनशिप एट होम, जो आपने मुझे सेशन की स्टार्टिंग में भी सम ऑफ यू मेंशन्ड कि पार्टनर के साथ आपका रिलेशन जो है या जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। So let's do one activity. You can do one activity with your spouse. So आपको क्या करना है, इनमें से आपको एक कोई एक्टिविटी, 1 or 2 एक्टिविटी आपको चूज करना है। You need to choose 1 or 2 activities from the given options. And you need to do it with your partner in this week. इस वीक में आपको आपके वो पार्टनर के साथ करना है। चाहे तो आप लॉन्ग वॉक्स पे जाइए, रेगुलर डेट टाइम पे जाइए, घर पर भी आप अच्छे से ऐसे साथ में बैठ के खाना खाइए, या तो आप कपल योगा कर सकते हैं, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आपको जो हॉबीज पसंद है, गार्डनिंग है, रीडिंग है, गाना गाना पसंद है, वॉट एवर इट इज, जो भी आपकी शेयर्ड हॉबीज है उसको एक साथ करिए। ठीक है, वॉचिंग समथिंग लाइट एंड हैप्पी, eating at least one meal together, talking about the baby positively, whatever you feel. इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ है तो आप वो भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। Now pick anything and make sure that you do it with your partner in this week. इस वीक में आपको वो अपने पार्टनर के साथ, बेबी के फादर के साथ वो चीज करनी है। सी कहीं ना कहीं होता है ना कि हम डे टू डे लाइफ में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि we start on missing some important things. कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें हम करना छोड़ देते हैं वक्त के साथ साथ। As life keeps on moving on, we have some responsibilities. We tend to lose on such aspects that have been mentioned over here in this. It's a good time that we think about it. I'll give you 2 to 3 minutes. Just see whatever you want to do. आप इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी चूज करें। ठीक है, आप इसमें से कोई एक एक्टिविटी चूज करिए ना, डिसाइड अ स्पेसिफिक टाइम एंड डेट एंड कम्युनिकेट विथ योर पार्टनर। ठीक है, आप अभी चूज करके आप मुझे बताइए कि आप कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं। जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स दैट यू वांट टू डू दिस विथ योर पार्टनर, एनीथिंग। इसके अलावा भी हो सकता है, हाँ, जो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स दैट इज आल्सो गुड इनफ टू स्टार्ट। लॉन्ग वॉक्स, ओके, एक नहीं आप 2-3 करना चाहो, दैट इज आल्सो ओके, अप टू यू। Long walk, singing song together, amazing, that's nice. बाकी की मदर्स आप नहीं करना चाहती हैं, if you want to do it, just write it in the chat box. थोड़ा सा इंटरैक्टिव रखिए। I'll ask something, you just write it in the chat box. However you feel like, just go on. Sit with an open heart, with nothing to think. ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, just write whatever you feel. और बाकी की मदर्स आप क्या करना चाहते हैं? एक साथ खाना खाने जाना चाहते हो,
एक साथ खाना खाना चाहते हो, कुछ अच्छा देखना चाहते हो, talk with the baby, amazing. Anything else that you want to do, just write it in the chat box and make sure that you do it. संकल्प को लेना और फिर उस संकल्प को पूरा करना है. Other mothers, what you want to do, just write it in the chat box. Talking positive about the baby with my hubby. That's great. आप सब लोगों ने सोच लिया ना आप क्या क्या करना चाहते हो और आप कब करने वाले हो इस वीक में, ये भी आपको डिसाइड करना है. ओके, तो अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए कि मुझे और क्या करना है, दैट्स ओके. टेक योर टाइम, मेक अ लिस्ट, शेयर इट विथ योर पार्टनर, कम्युनिकेट इट विथ him, and then just do it. Just see how good you will feel. Not just you, the baby would be also happy. Sometimes you really need to spend, just the three of you are spending the time. Yes? Yes. So far we have discussed 6 tools and techniques that can help you to reduce your stress level or to uplift the body. Are you ready for the last and final and the most powerful tool? Yes. Are you ready to unlock the 7th tool as well? If yes, then write it in the chat box. That yes, you're ready to unlock the 7th tool as well. All right. So let's move to the last and final and one of the most powerful tools. Okay, but before coming to the 7th tool, we have unlocked immense wisdom in 60 minutes. आप 8 बजे आए थे, 9 बज रहा है, ठीक है. आपने 6 tools के बारे में 60 minutes में सीखा. So let's do a quick revision of 6 tools that we have learned. पहला, ब्रीदिंग एक्सरसाइज थोड़ी बहुत जो हमने करी, इसके अलावा भी काफी सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थे जो आप कर सकते हैं. दूसरा, द कंट्रोल फिल्टर. तीसरा, gentle movements, बॉडी में कुछ मूवमेंट रखना is very important. Either go for slow walking, not brisk walking. Brisk walk नहीं करना है, little bit slow gentle walk. If you aren't doing anything, you can do this, ठीक है. चौथा है मंत्रा, immensely powerful, बहुत powerful है ये चीज. And of course, you got a little bit of glimpse of what mantra has an impact on your mind. Fifth है गर्भ संवाद. 3 Idiots का जो छोटू सा क्लिप हमने देखा, that must have given you a little bit of idea that why it is important and how it actually helps. Modern science ने भी कैसे इसको stamp पे prove करा है कि why it is important and how it actually helps the baby. And the 6th one we unlocked was the pregnancy partnership, जिसमें आपने बताया कि आप अपने पार्टनर के साथ क्या क्या करना चाहते हैं. But stress doesn't reduce by understanding alone. It reduces with practice. अच्छा, क्या सिर्फ एक दिन ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने से बाकी के जो हमारे बचे हुए प्रेगनेंसी मंथ्स है क्या उसमें हमें कभी स्ट्रेस नहीं होगा, ऐसा है क्या? नहीं ना. जब हम कोई चीज रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं, निरंतर उसको प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके हमें उसका इम्पैक्ट मिलता है. सी देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल saying in Patanjali Yoga Sutras. Patanjali Yoga Sutra में महर्षि पतंजलि बहुत अच्छे से बोलते हैं, if you want to see some results in your life, then आपको वो चीज कब तक प्रैक्टिस करना पड़ता है, उन्होंने वो टाइमलाइन दिया. It says सतु दीर्घ काल, नैरंतर्य. सतु दीर्घ काल माने for a very very long period of time you need to practice it. नैरंतर्य, रोज जब आप करते हो. सतु दीर्घ काल नैरंतर्य. सत्कार सेवितो, जब आप उस प्रैक्टिस को सत्कार के साथ, ऑनर के साथ, रेफरेंस के साथ प्रैक्टिस करते हो. सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ होगी, तब जाके उस प्रैक्टिस में आप एस्टैब्लिश होते हो और तब जाके आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं.
यस तो जब आप किसी चीज को अच्छे से रोज रोज विथ ऑनर एंड रिस्पेक्ट के साथ प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा. See, there are advanced practices that can completely transform your pregnancy. And these advanced practice need hand holding. जैसे सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही है जो मैंने आपको बताई है, आप कहीं से भी देख के वो चीज कर सकते हो. बट वेन यू गेट लिटिल बिट ऑफ गाइडेंस प्रॉपर, उसके साथ जब आपको आपके हिसाब से, आपकी प्रेगनेंसी के हिसाब से जब आपको वो चीज मिलती है, तो वो एक हैंड होल्डिंग हो जाता है आपके लिए, सो दैट यू गेट बेटर रिजल्ट्स. डोंट यू अग्री विथ मी? है ना? लगता है कि नहीं, हमें ये चीज जब हमारे हैंड होल्डिंग के हिसाब से हमें कोई चीज मिलती है, हमारे हिसाब से कोई चीज मिलती है, दैट गिव्स यू बेटर रिजल्ट्स. सो काफी मदर्स हमारे साथ ये वर्कशॉप अटेंड करती हैं एंड दे फील इंस्पायर्ड आल्सो कि हाँ हमें ये चीज करनी है. And yet, when we speak to them again after 2 months, they say, I learned so much, but couldn't implement. मैं इस वर्कशॉप में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सीखा भी बहुत कुछ, पर मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई. मेरे लाइफ में थोड़ी बहुत बिजी चल रही थी, कुछ चैलेंजेस आ गए, कुछ इमोशंस ने की वजह से कुछ टर्बुलेंस हो गया था, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, वॉट एवर इज द रीजन, आई कुडंट अटेंड the workshop and the changes will never. जब हम हमारे साइड से स्टेप नहीं लेते हैं और something us is holding back, then the change can never happen. First, we need to change it. We need to take a step for the change. The truth, creating a magical pregnancy is not just learning about the 6 powers, not 5, the 6 powers. It's a daily environment and a daily practice. जैसे मैंने आपको बताया, सतु दीर्घ काल निरंतर, रोज रोज जब आप करते हो throughout the pregnancy, that is when you see the results. Babies get shaped by what the mother feel and practicing every single day, and that is why आपको ये चीज रोज प्रैक्टिस में आपकी आ सके, इसीलिए we have created 21 days womb calm reset. So you know कि हमें ये चीजें करनी चाहिए, हमें स्ट्रेचिंग करना चाहिए, हमें अपने बच्चों से बात, अपने बेबी से बात करना चाहिए, वी शुड डू सम ब्रेन जिम एक्टिविटीज, बट वी रियली डोंट नो वेयर टू लैंड. हमें कहाँ जाना है, हमें कभी कभी ये पता नहीं होता है. हमने आसपास से सुना जरूर है कि ये चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट वी रियली डोंट नो वेयर टू स्टॉप. हमें ये पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है उस चीज के लिए. सो here is a magical pregnancy workshop जहाँ पे हम 21 days तक आपका हाथ पकड़ के आपको अलग अलग एक्टिविटीज करवाएंगे, जो एक्टिविटीज सिर्फ 20 से 30 मिनट की होगी पर डे. मंडे टू फ्राइडे रहेगा, जिसका टाइम रहेगा रात को 9 से 9:30 बजे, वेर आपका सारा खाना पीना एंड एवरी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डन एट दैट टाइम. 9 से 9:30 बजे का जो टाइम है जिसमें हम आपके फाउंडेशन पे काम करेंगे, where you can actually connect with your baby. So in the 21 day transforming journey जो रहेगा, उसमें हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस को कुछ फॉलो करेंगे, जिसमें आप पहले वीक में you learn and experience the shift from stress to sense of calm. वीक 2 में हम क्या सीखेंगे, फ्रॉम टेम्पररी काम टू इनर स्टेबिलिटी. और वीक 3 में हम क्या सीखेंगे, फ्रॉम एफर्ट टू नेचुरल हैबिट. पहले हम ये सीखेंगे कि स्ट्रेस से हम काम वाले उसमें कैसे जा सकते हैं. एक बार वो समझ में आ गया, फिर टेम्पररी कामनेस से उसको इनर स्टेबिलिटी कैसे बनानी है उसके बारे में सीखेंगे. थर्ड वीक में वो कैसे आपका नेचुरल हैबिट, आपका नेचर ही वो बन जाए, उसके बारे में सीखेंगे. Isn't it interesting and quite deep to learn, and you actually need to grow not in just yourself with the baby also. So live guided सेशंस रहेंगे मंडे टू फ्राइडे रात को 9 से 9:30 बजे, जिसमें मंडे को हम कुछ काम नर्वस मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क्स करेंगे. ट्यूसडेज को हम गर्भ संवादन जो कम्युनिकेशन रहता है उसके ऊपर फोकस करेंगे. वेडनेसडेज को हम कुछ ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, कुछ ऐसी गेम्स खेलेंगे
थर्सडेज को साउंड हीलिंग रहेगा. फ्राइडेज को विल बी कपल प्रैक्टिसेस होंगी. और सैटरडे संडे आपको ये ना लगे कि कुछ खाली है, कुछ करने के लिए नहीं है, तो सैटरडेज को डीप रीसेट एंड इनर रिकवरी के ऊपर सेशन रहेगा. और संडे को आपका इंटीग्रेशन एंड स्टेबिलिटी के ऊपर सेशन रहेगा. So it's a full package from Monday to Sunday where you will be learning different activities on every single day. The 4 transformation tools that you will master in these 21 days. The first tool is the womb communication system, जिसमें हम अलग अलग तरीकों से अपने बच्चों से बात करेंगे. जैसे किसी दिन हम टच से कर रहे हैं, किसी दिन फीलिंग से कर रहे हैं, किसी दिन अफर्मेशंस है, किसी दिन म्यूजिकल है. सो वी विल बी वर्किंग ऑन द कम्युनिकेशन अलग अलग तरीकों से. ठीक है. दूसरा टूल जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर रहेगा, जिसमें हम चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, वेगस नर्व के ऊपर करेंगे. ठीक है. वूम रेजोनेंस मेडिटेशन करेंगे. ऑफ कोर्स जो यहाँ पे लिखे हैं उसके अलावा भी वी बी प्रैक्टिसिंग डिफरेंट एक्टिविटीज. तीसरा टूल जो है वो माइंड डिटॉक्स एंड क्लैरिटी सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें यूजुअली हम प्रेगनेंसी के टाइम पे भी थिंक अलॉट, बहुत ओवर थिंकिंग रहता है, समझ में नहीं आ रहा होता है क्या चल रहा है हमारे अंदर. सो जब आप ये टूल को अनलॉक कर पाएंगे अलग अलग तरीकों से, जैसे सम डेज वुड बी डिजिटल डिटॉक्स, सम डेज वुड बी पैटर्न इंटरप्ट, सम डेज वुड बी इमोशनल रिलीज, माइंड डंप, एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज वुड बी देयर, डोंट वरी. टूल 4 जो होगा वो क्या रहेगा? सिंगिंग एंड रिदम, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, भजन एंड साउंड फ्लो, मंडला फोकस. सो हर एक एक्टिविटी का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है आपके ऊपर भी और आपके बेबी के ऊपर भी. And there is guidance beyond the live sessions to total take away your stress. तो ये सारे tools हैं जो आपको क्लासेस दे रहे हैं, उसके अलावा भी we have something for you. प्रेगनेंसी क्लैरिटी वॉल्ट, जिसमें जितने भी क्रिटिकल डिसीजंस रहते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं आपके लिए. कैसे क्या आपका हॉस्पिटल बैग कैसे प्रिपेयर करना है, प्रिपेयरिंग फॉर द जर्नी टू लेबर रूम के टाइम पे आपको क्या क्या चीजें रखनी है अपने साथ, आपको सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी के बीच में जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में आपको समझाना, बताना. सो ये सारी चीजों का भी हम ध्यान रखेंगे. तो दूसरा है वैदिक काम एंड हीलिंग लाइब्रेरी. So we'll be listening to some selected Bhagavad Gita shloks for the mental clarity. जैसे अभिमन्यु ने किया था, प्रहलाद ने किया था, अष्टावक्र ने किया था, और babies can also do that. ठीक है. राम रक्षा स्तोत्र के बारे में, राम रक्षा स्तोत्र को हम सुनेंगे. We'll be listening to soothing mantras. तीसरा है आयुर्वेदिक स्लीप रीसेट प्रोटोकॉल. ये आजकल काफी चीजें मॉडर्न हो गई है, बट पीपल आर कमिंग बैक टू देयर रूट्स. वापस से लोग आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं. सो वी विल बी लुकिंग इनटू द आयुर्वेदिक स्लीप रीसेट प्रोटोकॉल एज वेल. एंड द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ दिस एंटायर प्रोग्राम, प्राइवेट व्हाट्सएप सपोर्ट स्पेस रहेगा आप लोगों के पास. वंस यू एनरोल फॉर द वर्कशॉप यू विल बी हैविंग योर प्राइवेट व्हाट्सएप सिस्टम, जिसमें आप आपके बडी से मिलोगे. यू विल बी हैविंग अ स्पेस वेयर यू कैन एक्चुअली share and express all your fears, anxiety, overthinking, जो कुछ भी आपको लग रहा है आप वहां पे जाके आपके बडी से बात कर सकते हो. Apart from that, we'll be having weekly progress check-ins, track actions and improvements. हम आपको daily basis पे, weekly basis पे we'll be checking you, we'll be looking into your journey personally. ठीक है. As I mentioned कि ये जो 21 days का वर्कशॉप है, सिर्फ 20 से 30 मिनट अपने लिए निकालना है. सिर्फ सुबह से लेके शाम तक हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ बिजी रहते हैं, बट ये 20 मिनट या ये आधा घंटा जो है वो हमें सिर्फ अपने लिए निकालना है, अपने बच्चों के लिए निकालना है. सो एज आई टोल्ड कि गाइडेड काम सिस्टम रहेगा, जिसमें हम मंडे टू फ्राइडे आपको क्लासेस देंगे. सैटरडेज को आपका डीप नर्वस सिस्टम वाला सेशन रहेगा. संडे को इट वुड बी एन इंटीग्रेशन एंड रिफ्लेक्शन वाला सेशन. उसके अलावा हम आपको फोर ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स दे रहे हैं. ठीक है, जिसमें मैंने अभी आई जस्ट गॉन थ्रू दीज पॉइंट्स. ये सब के अलावा भी वी आर गिविंग यू समथिंग रियली आई वुड से वेरी कनेक्टिंग एंड वेरी
easy to access whatever you are going through. ठीक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है 21-day वर्कशॉप में, so you'll be getting the daily support. एक WhatsApp support system रहेगा हमारा, जिसमें we'll be helping you in every possible manner we can. इसके अलावा we have support ecosystem as well, जिसमें 30 days का rolling recording रहेगा, resource libraries रहेगी. So every single day of your pregnancy is something where you are learning something new, where you're feeling quite good, you're feeling calmer, you're in a much more you have much more clarity than what it was in the other months, the previous months where your mind was quite cluttered. So, as I told कि हम ये 21 days में हम आपको क्या क्या करवाने वाले हैं, कौन कौन से टूल्स आप अनलॉक करने वाले हो, बट यू मस्ट बी वंडरिंग कि इन सबका प्राइस क्या है. ठीक है, सो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सारी चीजों का एक्चुअल में प्राइस कितना होगा, व्हाट वुड बी द इन्वेस्टमेंट. सी, हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च किए. दे हैव स्पेंट लैक्स ऑन आवर कोचिंग, ट्यूशंस, कंफर्ट्स, ताकि हमें हमेशा बेस्ट मिल सके. यस, हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे को मैं बेस्ट दूं, वट एवर इट इज, बी इट एजुकेशन, बी इट कंफर्ट, बी इट क्लोथ्स or luxury, whatever it is, we want to give best to our child. But don't you think when we spend lakhs on the building, it is important to invest on the foundation? जब हमारी अगर हमें इमारत खड़ी करनी है, so don't you think कि उसका जो बेस है, उसका जो फाउंडेशन है, वो स्ट्रांग होना चाहिए. Yes, strong foundation for what? For your baby's brain, for emotion, for the stress, इम्यूनिटी, जेनेटिक्स, हर एक चीज में उसका जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, है ना. सो ये पूरा कोर्स जो है वो 20,500 का है. ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर द एंटायर ऑफलाइन प्रोग्राम इज 20,500. लेकिन हम आपको ये प्रोग्राम वर्चुअली दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं. यू वोंट हैव टू इन्वेस्ट 20,000 फॉर दैट. ठीक है, of course the regular offline price is 20,000, but इसका online price जो है वो 8,999 है. But again there is a twist. Wait, we are coming to this. There is a twist, but there is an amazing offer for the moms, those who have joined today. Why are we doing this? हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं? अगर ये प्रोग्राम खाली मदर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनका स्ट्रेस कम करने के लिए, उनके बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो प्राइस जो है शुड नॉट बी अ रीजन, और प्राइस शुड नॉट बी समथिंग दैट शुड बॉदर यू. यस, हम आपको ज्यादा टेंशन या आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहते, आपको गिल्टी फील नहीं करवाना चाहते हैं कि इतना ज्यादा प्राइस है एंड आई कैन नॉट पे, या प्राइस शुड नॉट बी समथिंग दैट हमें परेशान करे वो चीज, है ना. सो वी हैव मेड अ कॉन्शियस डिसीजन. वी आर ट्रीटिंग दिस एज अ मूवमेंट टू मेक conscious pregnancy accessible for the amazing mothers out there, those who have joined the session have stuck with us till the last. The session, the price or the workshop, the 21-day workshop is just for 4,999. It's not even 8,999. If you register today itself right away, then the workshop, the 21-day workshop, is for rupees 4,999. Yes, isn't that great? We want to make this really accessible for the mothers so that we can add value to your pregnancy. See, हम इतनी सारी चीजें आपको दे रहे हैं. It's just for rupees 4,999 rupees, जिसमें आपको मंडे टू संडे तक हम आपको क्लासेस दे रहे हैं. सिर्फ आधा घंटा आपको अपने लिए निकालना है. In case if you're stuck anywhere, you have any problem, you can just we have the support ecosystem. We have WhatsApp support group where you can reach out to us. Yes, just for today the price is rupees 4,999 rupees. What are you thinking? आप इस चीज को, you're not just investing in yourself, you're actually investing on the baby's foundation also. Yes.
So we'll be giving one in the chat box. You can see there is the link for registration. You'll click on the link and you can just fill out the details. You can just write your name, email ID, and the number. Once you do that, you can actually, then you have to pay. Once you pay, you'll get access to these things, and we'll make sure that your pregnancy journey is not just good, it's wonderful. Yes. So chat box में हमने आपको बता दिया है. We have shared the link for the registrations. Do it right away. Committed mamas will of course get a surprise. So we have a treasure box. There we have this Star Kid activation guide. Monthly रागा का playlist है. इसके अलावा healthy pregnancy lifestyle guide मिलेगा आपको. उसके बाद curated playlist for गर्भ संवार. ये सारी ही चीजें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं. Just for rupees 4,999. Do it right away. See, आप 1 घंटे से मेरे साथ वर्कशॉप में बैठे हैं. You must have realized that some things are actually very important. Yes, so we'll be listening to some testimonial videos जो mothers ने हमारे साथ अभी तक join किया, and how the magical pregnancy has helped them, how the magical pregnancy have value added to their pregnancy. I think this is like the second 5-day batch I'm attending. I've also did like the previous one. Yes. One, I really think, that you've mentioned a couple of times, it's better to better to know things than not to know things. I think initially when I did get pregnant, I was really skeptical and anxious and scared about a lot of things. Now that you've covered a lot of topics in a lot of detail and very comprehensively, I think it's great that we know what we can expect so we can prepare accordingly. That's one thing that's really helped. I think every topic that you've spoken about and covered, it's been done in a lot of detail with a lot of thought, with a lot of guidance. I've really liked the nutrition class, especially where you've spoken about what to eat, what not to eat specifically, focusing on the mother's health also, because typically you'll see that once the baby comes out, I'm sure like everyone also takes care of the mother, but the baby becomes the focus, not the mother's health so much. And I think it's great that you're also teaching us how to take care of ourselves and, recover fast, which is obviously what everyone wants to do, given I'm sure everyone has different goals and aspirations in life today. And obviously having a baby is a very big milestone, but you also have to get back to life and get back to work. So I think it's been very positive. I think I'm a lot less skeptical, a lot less anxious. It's still scary. I won't lie about that. But like you mentioned, manifest, be positive, eliminate fear. I really liked how you did not use the term labor pain, but labor pleasure. That's something I haven't obviously, thought about, because every time I talk to people about their experiences, I just end up getting really scared and anxious because obviously it's my first baby. So I think it's been a great experience overall. One thing I feel that one thing that would help us, better this is the fact that maybe if we could receive recordings in the decks that you've covered, it'll help us. Obviously what I've done is I've taken screenshots and kept it for myself, but maybe if we had the entire deck with us, it would be easier to refer because everyone is at different stages of their pregnancy. So sometimes, you need to check back later, depending on what stage you are at. But otherwise, overall, I think it's been a great experience. I've loved these classes so far. And I really, when I got pregnant, I was really looking for Garbh Sanskar classes. But I did not have any, I just randomly saw it. So these are the experiences of our mothers, those who have joined our sessions, those who were looking for some sessions to join, and they landed at one stop where they could find everything. अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये ना, तो you want to do everything for them. और अगर आपको उनके लिए सब कुछ करना है तो आप डिपेंडेंट वीक अरे प्लीज मुझे हेल्प कर दो से नहीं कर पाओगे. Because then everything became about now I have to protect them. Now I have to do everything for them. फिर आपको तलवार भी उठानी पड़ेगी, गदा भी उठानी पड़ेगी, स्कूल बैग भी उठाना पड़ेगा, सब कुछ उठा के चलो बॉस, this is for the kids. Yes,
जब हम एक बार when we are mothers, we have to be really strong, not just from outside but from within also. So we in the 21-day workshop we'll be working on both the aspects. हाँ, जब आप माँ बन जाते हो तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो. यस, जैसा वीडियो में बताया, आपको सब कुछ पूरे तैयारी के साथ you have to work. Yes. So there's an interesting fact that I want to tell you. Right now, the neurons are being formed in your baby's brain. So there are 250,000 neurons forming per minute in your baby's brain. This is very second. Every hour 15 million. Every day 360 million. और by birth तक वो 100 million हो जाते हैं total neurons जो. So don't you think that when you are actually creating ये सारी जो चीजें आपके बच्चों के साथ हो रही है, वो अगर एक उसको channelized वे, उसको एक shape मिल जाएगा, how wonderful it would be to have a child जो आपके सामने होगा, that would be, like optimum in most of the things you want. So this window closes at birth. एक बार आपका बच्चा इस दुनिया में आ गया है, you cannot optimize your baby's foundation after delivery. आपके हाथ में वो सारी चीजें उतनी नहीं रहेंगी जितना अभी है आपके पास. What is the correct, what is the right time to, make sure that the baby gets everything that you want is now. This is the time. So in the chat box, we have shared the registration link. Make sure that you do it right away. Every day you wait is optimization lost. ठीक है, जैसे मैंने बताया, आपके बच्चे के हर मिनट 250,000 न्यूरॉन्स जो है वो बन रहे हैं. ठीक है. Right now is also a time to start. Never mind, in whichever month of pregnancy you are, you can work on your baby. आज भी आप अपने बच्चों पे, आप अपने बेबी पे काम कर सकते हैं. So how many days until your delivery date? That's your window. So we are offering this 21-day workshop. 30 minutes you need to spare. Come on, इतना तो हम अपने लिए spare कर ही सकते हैं. Yes, पूरा दिन थक हार के अपने लिए भी तो कुछ टाइम चाहिए ना. We need some time for ourselves. Yes, so all of this you are getting it at just rupees 4,919. Your body never forgets pregnancy. Every emotion, every struggle, every joy, it imprints in your cells. Trauma during pregnancy can show up years after as unexplained anxiety, body pain, or even disconnection from your child. But it works both ways. If you fill the season of pregnancy with calm, love, and conscious practices, your body carries that memory too. Women who nurture themselves during pregnancy often say that they feel stronger, softer, much better for the rest of their lives. Spiritually, pregnancy is not just 9 months, it's an initiation. The body remembers it because it's the season where you touched creation itself. So honor your body now, because these memories become the foundation of your motherhood. Yes, so really you need to honor the baby and start working on the body right away, क्योंकि प्रेगनेंसी आपको जिंदगी भर याद रहे. So जैसा आपने अभी अपने आप ऊपर काम किया होगा, वही आपके मदरहुड का बेस रहता है. So don't you think आपका जो मदरहुड का बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? Yes. So some movements in our life are just unforgettable. कुछ ऐसे हमारे movements होते हैं, हमारे moments होते हैं हमारी life में जो हम कभी भूल नहीं सकते हैं. Pregnancy is one of them. Yes, How do you want to remember this pregnancy? आप कैसे चाहते हैं कि आप आपकी pregnancy को याद रखें? बहुत stress में थी, बहुत इधर दर्द था, उधर दर्द था, ऐसा था, वैसा था, या फिर उसको अच्छी तरीके से याद रखना चाहते हैं कि नहीं, मैंने अपने ऊपर काम किया है, अपने शरीर के ऊपर काम किया है, ना ही सिर्फ बाहरी तौर से बल्कि मेंटली भी मैंने अपने शरीर पे बहुत अच्छे से काम करा. So every pregnancy leads to a baby, but the experience and the foundation we create during those 9th months can be very different. Sometimes we just go through it and sometimes we consciously shape it.
या तो हम जैसा अभी तक हमारा रूटीन चल रहा था उसको चलने दे सकते हैं, या तो हम उसे अच्छे से शेप करके उस प्रेगनेंसी को यादगार, अच्छे वे में यादगार बना सकते हैं. ऑफ कोर्स ये हमारे ही हाथ में, नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू. जो भी प्रेगनेंसी का हमारा जो बेस है, जो भी फाउंडेशन है, वो हम ही रखने वाले. नोबडी एल्स इज गोइंग टू कम एंड डू दैट फॉर अस. बट व्हेन we are here to help you out, to handhold you, to take you till the end, till your pregnancy. We will be guiding you in every possible manner we can. Yes, so if you haven't registered so far, make sure that you do it right away, not just for you, but for the baby. Whenever you're ready, whenever you're ready, whenever. See, as I told कि हमें हमारे अलावा और कोई पुश नहीं कर सकता है, ठीक है. So the person you are waiting for to push is just you. ठीक है. अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है तो you really need to start yourself and see what. So once a young boy. Yes. So once a young boy and his father were walking through a forest, and they were really enjoying their walk, when along the way they found a large branch had come and cut off the forest path they were on. So the boy turned to his father and said, "Father, do you think I can lift that branch?" So the father said, "Yes, my son, but you have to use all your strength." And the boy ran up and he held the branch and he tried his best to lift the branch. And he wasn't able to lift it. He says, "Father, I'm not able to do it." Father said, "Son, I said you have to use all your strength." So he tried again. Again, he lifted it and closed his eyes and he clenched his teeth and he really tried. He wasn't able to lift it. He says, "Father, it's not working. I'm trying my best. I'm not able to move it." And the father said, "Son, you never asked me. I said use all your strength." So in this story, we haven't put our very best. We haven't accessed our full strength unless we've thought about who can we ask for help. And there's nothing wrong about asking for help. This is how we bring out the best and we conquer all the challenges of life. We face them with the right attitude, from independence to interdependence. Yes, did you get something from the video? Use all your strength. कभी कभी जब अगर हमें किसी से मदद मांगना पड़े तो ये वो नहीं दर्शाता है कि हम कमजोर हैं. Doesn't show that you are weak. Yes, asking for help is a sign of strength and not weakness. ठीक है. So pregnancy is not meant to be done alone. आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में. Magical pregnancy is willing to support you. हम लोग हैं आपके साथ. We are with you till the end of your pregnancy. Ask for help from your partner, family, friends, community. जिसके भी साथ आपको लगता है आप comfortable हैं, उनसे मदद मांगने में कोई बुराई नहीं. ठीक है. It's not a sign of weakness. It is a sign of strength. Yes. So use all your strength. ठीक है. Okay. Now imagine yourself 3 months from today. Sleeping peacefully, waking up confident, feeling your baby responds when you speak. Your husband looks at you and says, "I've never seen you this calm." And when your baby arrives, you know you gave your baby the best start possible. जैसे मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि हमारे पेरेंट्स ने हमेशा हमें बेस्ट देने की कोशिश करी, चाहे वो किसी भी चीज में, be it education, comfort, clothes, whatever it is. हमारे पेरेंट्स ने हमें हमेशा बेस्ट दिया. हमें भी हमारे बच्चों को बेस्ट देना है. यस. तो अब अपने आप को 3 महीने बाद इमेजिन करिए, अगर ये सारी क्वालिटीज आपके अंदर है, अगर आप शांत है, आप काम है, you are much more stronger than you were before. How would you feel? Nice, no? It's quite good. अंदर से अच्छा लगता है, हमें खुशी महसूस होती है. So let's make this your most magical 9 months. A peaceful womb is a peaceful start. You don't have to do this alone. Say yes to joy, clarity and confidence. आपको ये अकेले नहीं करना है. We are with you. We'll be helping you in every possible manner we can. जैसे मैंने बताया 20-day workshop रहेगा. उसमें हम आपको अलग अलग एक्टिविटीज करवाएंगे. You'll be having your WhatsApp
सपोर्ट सिस्टम जिसमें आप आके अपनी प्रॉब्लम्स जो कुछ भी है आप शेयर कर सकते हैं. सो लिंक अभी भी कमेंट चैट बॉक्स में है. यू कैन जस्ट गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ. यस. Okay, Mansi ji has registered. Then Riddhi ji has registered. हाँ, so जिन लोगों ने registration कर दिया है, don't worry, we'll reach out to you people. हम आपको reach out करेंगे. Don't worry, we are there to help you. And those who are still thinking to register, please just do it right away. We are there for you. We would love to help. If you have any questions, then you can ask. किसी को अगर कोई question है तो वो पूछ सकता है. बाकी thank you so much for joining the webinar. Then those who stayed till the end, it was amazing meeting you all people. Of course, ऐसे मैं आपको नहीं देख पाई हूँ, but of course, I hope you enjoyed the session. You loved it. Yes, okay. Send some hearts in the comment section if you want. We'll see you in the sessions in the workshop. Yes. Bye bye everyone. Just take care and make sure that you keep smiling.